Cedric is smelling it like the Indian chef right there. So Cedric, satsiriakal. Satsiriakal. Oh wow, yes. If it is really good, then it is chak de phatte. What is? Chak de pate. Chak de phatte, yes. Okay. And if it is like normal, then it's like theek hai. ठीक है. Okay. So guys, welcome to another vlog. This is Rahul from Berlin and आज आप बनावांगे rajma chawal for the weekend. ते पावांगे थोड़ी जी खप देसी अंग्रेजी mix. So guys, welcome to another vlog and आज हम बना रहे हैं भाई राजमा चावल हमारे बर्लिन वाले फ्लैट में. और राजमा चावल मैं नहीं बना रहा हूँ, आज राजमा चावल बना रहा सेड्रिक. Yeah, and Cedric आपको पूरी रेसिपी बताएगा. Cedric will tell you everything how we are cooking rajma chawal, kidney beans and rice. Satsiriakal. Oh wow, yes. ਤੇ ਭਾਈ ਜਰਮਨ ਮੁੰਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ. And now we are making, so ਸਾਡਾ भाई हमारा sauce is like the boil is ready. So Cedric, how much time did we take to boil this? Just tell me. Like 4 hours, maybe more. Like yesterday, basically half a day. Oh yeah, basically half day. So now this boil is ready, and now we are making a sauce. So sauce के लिए, what do we need for the sauce? I don't know. Okay, so we need, see, in this kind of gravy we need a lot of garlic. Okay. And we have tomato, of course. Tomatoes are here. Okay. So Cedric will first chop the onions like very fine. And then we have a lot of garlic here. So I will chop the garlic. You chop the onions. Okay? Sounds good. So भाई अब जो है राजमा का तड़का बनने जा रहा है और सेड्रिक काट रहा है प्याज और मैं काट रहा हूँ भाई गार्लिक, क्योंकि गार्लिक बहुत सारा डलता है आपको पता है राजमा में. और हमारे पास है भाई देसी यहाँ पे गरम मसाला. सेड्रिक ने पहले से भाई यहाँ पे गरम मसाला ला के रखा हुआ है बिकॉज सेड्रिक ऑल्सो लाइक्स इंडियन फूड, you know. So there is गरम मसाला here which we get in a Turkish store. So guys, हमने राजमा चावल बनाना शुरू कर दिए हैं. ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਰਾਜਮਾ ਬੋਇਲ. ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਟਮਾਟੋ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਾਰਲਿਕ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਛੇਤੀ ਮੀ ਐਂਡ ਸੈਡਰਿਕ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ. ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੈਨ ਵੱਡਾ ਪੈਨ ਤੇ ਲੋਟ ਆਫ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਟੁਡੇ. Works in English as well. What a pan. Yeah, okay. Kind of. Oh, yeah. Super translates. From oil, I guess. Oh yeah, of course. So भाई Cedric ने बनाना शुरू कर दिए भाई. So Cedric, first is the oil that is going in. Yeah, sure. Then what are you putting in next? The onions and then Onions. the garlic. And the garlic. Whoa, he already knows, man. Wow, yeah, that's how it goes. Yeah, I think the curry making is mostly similar in many countries. So yeah, just a little bit of difference here and there. So guys, a lot of garlic goes in right here. Oh yeah, so Cedric is putting chilies in there, and Cedric भाई बहुत chili खा सकता है. So guys, यहाँ पर ग्रेवी बनना तैयार शुरू हो चुकी है और सेड्रिक धीरे धीरे इसको हिला रहा है भाई. सेड्रिक से हम बनाएंगे राजमा चावल. No. हम ओके हम बनाएंगे राजमा चावल. Rajma chawal. Oh yeah. दिखाएं ज़रा हमारे पास कौन कौन से राइस हैं. ये है भाई हमारे पास थाईलैंड वाले जैस्मिन राइस एंड साढ़े को ऑल्सो है गया पंजाबी डिलाइट बासमती राइस. So Cedric, which one?
Punjabi delight basmati rice or the Thai style. Basmati rice is enough, we can use Oh yeah, basmati rice is enough. We can use this. So it should go the Punjabi style. तेरी गाली लाली मेरियां गालियां दाइयां नी क्यों घर चलाउण नूं फिरदी ऐ जो की perfect. So garlic went, everything went. Now some chili. So guys, यहाँ पर अब हमने tomato puree डाल दी है. Tomato puree has gone inside, and now we'll let it cook for like say 20 minutes. Yeah, 20 minutes. And जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, like you know when we get to know that this is done, that when the oil comes out, comes on the top. So then we, but before that we do the grinding thing once, like this. Okay. Yeah, because we put in some solid stuff there. Yeah. And we want our gravy to be smooth, so we can do that. So do one thing, we can cover it so that it cooks faster and cooks well. And हम इसको slow उस पे बना रहे हैं. And we're giving it another 20 minutes for the sauce. जो राजमा की हमारा तड़का है वो बनने के लिए 20 मिनट और हम छोड़ दें. हमने इसमें चिलीज डाली हैं. Oh, Cedric, we have forgotten the most important thing in the world for anything. And what's that? I don't know. It's salt. Salt. Yeah, we have to put in the salt because we have already put in the tomatoes. So अब हम डालेंगे इसमें भाई नमक, और नमक के बाद of course हम इसमें डालेंगे गरम मसाला. गरम मसाला, yeah. So गरम मसाला, नमक, नाले आप पे पावांगे थोड़ी जी cinnamon, थोड़ा जा आप cloves, ताकि थोड़ा जा Indian aroma spices दा आवे मस्त एकदम. So Cedric is putting in the salt. I hope it doesn't go beyond. Yeah, and now the garam masala. And sorry यार साढ़े कोल इत्थे कसूरी मेथी नहीं हैगी. Actually we are missing on few spices that goes into this, but that's okay, Cedric. I don't know. So I leave it on you. Cedric थोड़ा जा हौले हौले पा रहा. Yeah, should be okay. अपने जाल दाए भाई, हमारा किचन थोड़ा कम साफ है तो उसके लिए माफ़ी. अभी हमने कल थोड़ा सा वैक्यूम क्लीन किया था, बट अभी बेटर है, पर पूरा अच्छा नहीं है. Till 3 पे लगाया है. And we will leave it for 20 minutes. Can we cover it with something, Cedric? Yeah. It's Maybe the other one for or just a cover. I think this should go. No. Because we're using the biggest pan. No. That's. Oh yeah, this should go. This should definitely go away. Oh yeah. क्या बात है. इससे क्या बात है. What? क्या बात है. क्या बात है? Yeah. So Cedric, bhai, kuch, Cedric is learning a few Hindi slangs and words. What does it? क्या बात है is like wow, Ah. Oh yeah. So guys, अब हमारे बासमती राइस पंजाब वाले सीधा जा रहे हैं भाई पैन के अंदर. एंड इसमें हमने थोड़ा सा डाला है ऑलिव ऑयल एंड थोड़ा सॉल्ट, एंड दैट्स इट, एंड सम वाटर. Now we are covering it and cooking the rice. और यहाँ पे हमारे राजमा का तड़का, राइस, और ये हमारे हैं राजमा itself. There is. I think this one fits, no? Doesn't? Maybe. Oh yeah, it goes right in there. I'm waiting for the perfect color. Yeah. Actually, this sauce should not be very thick. It can be a little, on the looser side, on the watery side, Okay. because we have to consume it with rice. Okay. So it can, but we'll cook it for some time,
Okay, so we are almost like done with the sauce. Rice in here, and ये तो पहले से हुआ है. So Cedric, you have just tasted, Yeah. I don't know what's missing. but how about the salt? I think it's okay. Salt is okay? Maybe tiny bit, but it's alright. Okay, salt is okay. So जब salt okay है तो बाकी तो okay हो ही जाएगा. So if the salt is okay, the rest will follow. Yeah. That's good. So अभी हमने इसको now we will make a तड़का. Okay. Tadka. Tadka is like we will take some butter and we'll put some herbs and some chili, and once it's hot, we'll put on the gravy once it's all done at the end, Okay. just for the extra aroma in there, you know. So भाई राजमा चावल almost done है. आज देसी दे जर्मन मुंडे नाल बह के खाणगे राजमा चावल पंजाबी. And basmati rice is almost done. Yeah. So guys, हमारा खाना वाना सब रेडी हो गया है. This is राजमा. देख लो भाई, सेक्सी से लग रहे हैं राजमा. Cedric will taste and Cedric taste करके बताएगा कि भाई क्या लग रहा है क्या नहीं, खाने में कितना मज़ा आया, क्या हुआ. Yeah, Cedric, what do you think? Smell? How is it smelling? Smelling nice. Smelling nice. Yeah. Cedric is smelling it like the Indian chef. Right there. Like a lot of gravy is nice idea, and less rice, yeah. And yeah, you like onion salad, like it goes in there with it. Yeah. Yeah, sure, okay. और ये आ गए Cedric के प्याज. Yeah, should I just put it in here? Yeah, sure. Okay. Yeah. How much? Yeah, some on this as well. Should be all right. Yeah. Check the pate. ओ भाई चक दे फटे हो गया काम. चलो मैं भी देखना. Say that a little loud once again. Check the pate. Okay, so now I tested whether Cedric is a little generous to the situation, or is it actually chak de pate. चावल देखो, हाँ भाई, कलर और सब कुछ एकदम इंडिया जैसा ही है. It's very nice. Oh, it is actually chak de pate, yaar. Wow, man. It's really tasting very nice. Wow. I don't know, it's like tasting really good, man. Bhai Mazaj. Cedric, thank you so much for being the partner in crime. Wow. I enjoyed it. It's really nice, man. Really nice.